Bismillahirrahmanirrahim. Corporate finance students, today we'll be continuing with the topic of corporate valuation, value-based management and corporate governance. This will be part 2 of the lecture. In part 1 of the lecture, we covered the concept of we covered the corporate valuation model, in which we covered how to value the value how to calculate the value of operations, and then the terminal value of operations for a constant growth fund. So these were the topics that basically were covered. Today in this lecture we'll cover further examples related to these topics, as well as we are going to cover the concept of expected return on invested capital. So let's start with today's lecture. So we'll start with a few examples related to the topic of value of operations. So here's an example number 1. Brooks Enterprises has never paid a dividend. Free cash flow is projected to be 80,000 and 100,000 for the next 2 years. ठीक है, तो for the next year it is 80,000, and for the next following year it will be 100,000. So these are the cash flows for the next 2 years respectively. After the second year, free cash flows is expected to grow at a constant rate of 8%. The company's weighted average cost of capital is 12%. So this is the value for WACC. Now we have to find out two things. Number one, what is the terminal or horizon value of operations? Here the hint is that find the value of all free cash flows beyond year 2 discounted back to year 2. And second requirement for this question is that we have to calculate the value of Brooks operations. Okay, so based on lecture number 1, you can try solving it, and once you do it yourself on your copy using your calculator and pen, so then you can compare it with the next slide, where we are going to show you the solution for this. You can pause this presentation maybe for 3 to 4 minutes and try solving it, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो लेक्चर 1 में आपने किस तरीके से, उसमें हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So let's move on to the solution for this example. Okay, so in part A of the question was that we want to find the terminal value. So this is the terminal value or the continuing value. The formula for this is free cash flows at year end, means the second year, in this case second year, 1 plus G. 1 is constant and G is the rate of growth. WACC is weighted average cost of capital, and then again minus G is the rate of growth. Putting the values which are given in the question, free cash flows at the end of year 2 are 100,000. 1 plus G is 1.08. Growth rate is 8%. 12%. It is this will be divided by WACC, which is 12%, minus G is 8%. So once you solve this, you get the answer of 2.7 million. So this 2.7 million is your terminal value at the end of year 2. ठीक है, ये आपके पास जो आपकी सेकेंड ईयर के बाद जो है, ये आपकी जो आप कह रहे हैं कि जी द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 8%, तो सेकेंड ईयर के बाद कि जो उसकी वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस बनती है वो ये 2.7 मिलियन बनती है. तो दैट वाज द part A of this question, the first requirement for this question. Now in part B we need to find out the value of operations, so let's see how we can do that. Okay, so value of operations is basically the present value of all
expected future cash flows. So for calculating of present values, remember that we are using a weighted average cost of capital of 12% and we are given growth rate of 8%. Okay, so this 80,000 that we are getting at the end of year 1, we have to calculate its present value. ठीक है, तो अगर present value का formula, remember it is PV is equal to FV. This 80,000 is the value for this is the FV, this is the future value. इसको हमने divide करना है with PV is equal to FV divided by 1 plus I raised to the power n. 1 plus I में यहाँ पे जो आपने लेना है वो WACC की वैल्यू लेनी है, तो WACC is 12%, तो 1 plus I 1.12 हो जाएगा। 80,000 को अगर आप डिवाइड करें 1.12 से, it gives you this answer 71,428.57। ठीक है, ये आप अपने कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। सिमिलरली फिर हमने ये 100,000 जो हमें सेकेंड ईयर पे मिल रहा है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि दिस विल बी द फ्यूचर वैल्यू। 100,000 इसको डिवाइड करना है 1.12 रेज टू द पावर 2, सेकेंड ईयर है, तो उसको जब हम 100,000 को डिवाइड करेंगे विद 1.12 रेज टू द पावर 2, it will give us the present value of 79,719.39। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हमने पिछले पार्ट ए में जो हमने कैलकुलेट की, दैट वाज द टर्मिनल वैल्यू। दैट टर्मिनल वैल्यू इज एट द एंड ऑफ ईयर 2। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, फ्री कैश फ्लोज हैं, उनकी जो वैल्यू बन रही है, दैट इज 2.7 मिलियन एज वी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस इन पार्ट ए। अब इस 2.7 मिलियन की आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, 2.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, सेकेंड ईयर है, तो दैट विल गिव यू दिस value. You can try solving it using your calculator as well. So just open your calculators and try to solve के लिए 2.7 मिलियन की जो है वो कितनी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, क्या यही आ रही है कि नहीं आ रही। Okay, so next step would be just to add these present values of all the future expected free cash flows, and we get the value of operations for this firm 2,303,571.43. Okay, so that is the example number 1 that we considered. ठीक है, example 1 में हमारे पास these were the two requirements कि जी हमने in this given scenario we have to calculate the terminal value and the value of books operations. So this is how we calculated the terminal value using the formula future free cash flows at the end of year n 1 plus g divided by WACC minus g, and then in part B we calculated the value of operations for the same firm. Now let's move to the second example. Again, same concepts, we are going through the same concept that we have covered so far, that is the terminal value and the value of operations.
Okay, Dozier Corporation is a fast-growing supplier of office products. Analysts project the following free cash flows during the next 3 years, after which free cash flow is expected to grow at a constant 7% rate. Dozier's weighted average cost of capital is 13%. So here are the free cash flows. These are the estimates for the next 3 years. In year one, there is an estimate of minus 20 million, and then we have in the year two we have 30 million positive cash flow, and the third year we have 40 million positive cash flow. So this minus 20 might be your investment कि जी आपने invest किया और इस पे आपको ये next 2 years में these are the returns you are getting, and then after that you have a constant 7% growth in your free cash flows. What is Dozier's terminal or horizon value? ठीक है, तो अब आपने अगेन इसमें पार्ट ए की रिक्वायरमेंट ये कि इसकी टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल फ्री कैश फ्लोज बियॉन्ड ईयर 3 डिस्काउंटेड बैक टू ईयर 3. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने अपनी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी. सो ट्राई सॉल्विंग इट. ठीक है, पीछे हमने किया है टर्मिनल वैल्यू का वही फॉर्मूला जो हमने एग्जाम्पल 1 में यूज़ किया है. सो यू कैन यूज़ द सेम फॉर्मूला to find out this value. Part B में what is the current value of operations for Dozier? So part A or B is pretty much similar to the example one. So I can make a pause here for the presentation. Okay, you go through these, try solving these two, and then we can move on. Part C is something that is new, so we'll discuss that as well. The solutions are given in the next slides, but before we move to the solutions, I would recommend that you people try solving it yourself, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई आप ये वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट हो रही हैं, और अगर इसमें कोई आपके इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे इसी स्टेज पे क्लियर हो जाए. Okay, so you can pause the presentation here till the time you solve it. Let's see what are the what are the answers for these two, part A and B. Okay, so part A is value of operations. The value of operations, free cash flows at the end of year 3. Okay, if you go back to the question, you can see कि जी third year में हमें $40 million की जो free cash flows हैं वो हमने लिया. So this 40 million is the free cash flow at the end of year 3, and then 1 plus G growth rate is 7%, so 1 plus G is 1.07 divided by WACC is 13% minus G is 7%. So once we solve this thing, we get the terminal value of 713.33. Okay, this is the terminal value that we are getting at the end of year 3. Now part B of this question is that we have to find out the value of operations. For that we need to find out the present value of future expected free cash flows. So minus 20 that we are getting or that we are investing at the year 1, its present value using the WACC of 13%. Yani, how we are going to calculate it? This is the future value, 20 divided by 1.13 raised to power 1. So it will give us this value. Remember, this is minus, so we are putting brackets here to indicate that this is a negative value. Okay, so present value for this 30, again 30 divided by 1.13 raised to the power 2. So that will give us the present value of 23.49. Now the present value at the end of year 3, here we are getting this is the expected future cash flow at the end of year 3, $40 plus the terminal value, means the value for all the future expected cash flows beyond this point is
713.33 दैट वी कैलकुलेटेड हियर इन पार्ट ए। अब इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 753.33 आते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, ठीक है। रिमेंबर ये वी हैव टू ऐड दीज टू टुगेदर, क्योंकि ये भी हमें मिल रहा है। दिस इज आवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, और सेकेंडली ये जो है टर्मिनल वैल्यू है। तो इन दोनों को ऐड करके हमने दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो 522.10 आ गई। नाउ वी हैव टू ऐड अप all these three together to get the value of operations, which is 527.89. So those people who have got the answer correct, they should be, they should be they should feel comfortable, and those who didn't get this answer, they can see where they went wrong. अच्छा जी, थर्ड, अब इसमें एक चीज जो पार्ट सी था वो देख लें कि वो हमने इसमें पहले नहीं किया लेकिन अब इसमें आ गया। Suppose Dozier has $10 million in marketable securities, $1 million in debt, and 10 million shares of stock. What is the intrinsic price per share? ठीक है, intrinsic price per share हमने calculate करनी है. So first we need to find out the total value. So total value of operation is equal to what? It is equal to your operating value of operations of your operating activities. ठीक है, value of operations या value of operating activities which is calculated in part B, ये हमने ले लिया। इसके अंदर हमने value of non financial assets को ऐड करना है, ठीक है, which is 10 million। ये 10 million हमारे shares of stock हैं। सॉरी, 10 million इसमें हमारे marketable securities है ना। ये 10 million जो हमारे marketable securities हैं, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ ऑपरेशन थी, वो हमने वो पार्ट बी में हमने ऐड की। सॉरी, सो वैल्यू ऑफ ऑपरेशन हमने पार्ट बी में जो ऐड की है वो प्लस दिस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये हमारी टोटल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ ऑपरेशन, दिस इज योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये हमारी टोटल वैल्यू बन गई ऑफ आवर कंपनी। अब व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, यानी ये टोटल वैल्यू है, तो इसमें हमारा 100 मिलियन का डेट शामिल है, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग इज योर इक्विटी, ठीक है ना। ये पिछली क्वेश्चन में आप देख लें कि 100 मिलियन जो है इसमें डेट है, तो 100 मिलियन अगर डेट इसमें से टोटल वैल्यू में से, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस में से 100 मिलियन का जो डेट है वो माइनस कर दें तो रिमेनिंग विड बी योर वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। अच्छा, अब प्राइस पर शेयर क्या बन गई इसके हिसाब से, यानी इंट्रिंसिक प्राइस पर शेयर क्या बनी, वो हम दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 10 मिलियन शेयर्स हैं, तो प्राइस पर शेयर 43.79 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। प्राइस, इंट्रिंसिक प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट किया। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑपरेशन प्लस योर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स या जो इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, तो वो ऐड करके हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। जब हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ गई तो इसमें से डेट को माइनस करें तो दैट रिमेनिंग इज योर कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, यानी हमारे पास कॉमन इक्विटी की बुक वैल्यू आ गई या इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, सॉरी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, तो इसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स टू गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्राइस पर शेयर, ठीक है। एक्चुअली दिस शुड बी, दिस इज एज पर द वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस, आपकी जो शेयर प्राइस बनती है वो ये बनती है 43.79, जिसको हम इंट्रिंसिक प्राइस कहते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। इसमें जो पार्ट ए और बी है वो तो हमने एग्जाम्पल 1 वाला ही किया था, सिर्फ पार्ट सी इसमें ऐड हुआ, तो पार्ट सी की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी कि किस तरीके से हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंट्रिंसिक प्राइस पर शेयर। उसके लिए हमें इंट्रिंसिक प्राइस पर शेयर के लिए वैल्यू ऑफ ऑपरेशन प्लस वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स चाहिए, तो वो हमने ऐड करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसमें से डेट को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग इज योर वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी,
उसको आप डिवाइड करेंगे with the number of shares, that will give you intrinsic price per share. Okay, then let's move to the third example. Example 3. Watkins Incorporation has never paid a dividend. It's not known when the firm might begin paying dividends. Its current free cash flows is 100,000, and this free cash flow is expected to grow at a constant 7% rate. The weighted average cost of capital is 11%. Watkins currently holds 325,000 of non-operating marketable securities. Its long-term debt is 100,000, but it has never issued preferred stock. Watkins has 500,000 shares of common stock of stock outstanding. Okay, now the same thing that we did in the previous two example. First, we need to find out the value of operation. Then we need to calculate the company's total value, calculate the intrinsic price of its common equity, calculate the intrinsic price per share of stock stock price. So pretty much similar to example 2. ठीक है, उसके अंदर भी हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट किया था, यहाँ भी आप वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट करेंगे। और ये जो बी, सी और डी है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो अभी हम पिछले एग्जांपल में कर चुके हैं। ये टोटल वैल्यू फर्म की कंपनी की कैसे मिलेगी, वैल्यू ऑफ ऑपरेशन प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज टोटल वैल्यू आ जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक कॉमन एक्विटी, तो उसमें जो उनकी टोटल वैल्यू आ रही है उसमें से डेट की वैल्यू माइनस कर दें तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉमन एक्विटी आ जाएगी। और इंट्रिंसिक प्राइस पर शेयर के लिए जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास प्राइस पर शेयर आ जाएगी। So again, you can pause your presentation here for a couple of minutes, try solving this question. ठीक है, अपना कॉपी पे अपने पेन से कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व करें, पार्ट ए बी सी डी, and once you are done with it, you can move to the next slide. You can, you know, play your presentation. Okay, so I hope you people are done with it. So let's see whether your answers matches with the answer we have. जी, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस के लिए हमने क्या किया जी, सेम फॉर्मूला, फ्री कैश फ्लोज 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। फ्री कैश फ्लोज 100,000 के हैं, 1 प्लस जी, जी इज 7%, वैक इज 11% एंड जी इज 7। लेट्स सी, क्लियर है जी, वैक here it is given 11% and growth rate is 7%। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट इन की, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 2,675,000 आ गया वैल्यू ऑफ ऑपरेशन। दैट वाज द पार्ट ए। अच्छा जी, अब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हमने कैलकुलेट करनी है, तो वैल्यू ऑफ ऑपरेशन प्लस वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस तो ये पार्ट ए में जो हमने कैलकुलेट किया, और ये 325,000 जो हमने लिया है, दैट इज द value of marketable securities। ठीक है, Watkin currently holds 325,000 of non-operating marketable securities। तो ये 325,000 हमने non-operating assets की वैल्यू इसमें ऐड कर दी, तो that gives us the total value आ गई जी, which is 3 million। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ एक्विटी निकालने के लिए इस टोटल वैल्यू में से डेट को माइनस कर दें तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्विटी विच इज 2 million। प्राइस पर शेयर के लिए हमने इस वैल्यू ऑफ एक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, तो इट गिव्स अस प्राइस पर शेयर ऑफ $40। Those people who were able to solve it by themselves, they should be feeling quite comfortable. It means they have grasped the concept. जिन लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आया, तो they can compare their answer here and they can figure out कि जी where the things went wrong। तो hopefully you will learn by practicing these questions। Okay, so I think we have only these 3 examples which I think are more than sufficient to make the concept clear कि जी how we can calculate value of operations, how we can calculate the terminal value, how we can calculate the total value of the firm, how we can calculate the value of equity, and how we can calculate the intrinsic price per share। Okay जी, now moving on to the further
topics related to this chapter. Value drivers of firm's wealth. We can express the firm's value in terms of four fundamental wealth drivers. ठीक है, वैल्यू ऑफ यानी जो किसी भी फर्म की वैल्यू है या उसकी जो वेल्थ है, basically these are the four factors you can say which drive that wealth. Number one is the growth in sales, which is denoted by G, growth in sales. The second is the operating profitability of that firm. This operating profitability is equal to net operating profit after taxes and then we have this capital requirement CR, which is basically equal to operating sales, and the fourth thing is weighted average cost of capital. So these four wealth drivers are G, growth in sales, OP, operating profitability, CR, capital requirement, and WAC is weighted average cost of capital. Now, how do these drivers affect the value of a firm? Okay, so first, the sales growth rate usually but not always has a positive effect on value, provided the company is profitable enough. However, the effect can be negative if growth requires a great deal of capital and if the cost of capital is high. ठीक है ना, तो growth normally तो is indicating a positive effect on your value. ठीक है, जितनी आपकी sales में growth होती जाएगी उतनी आपकी firm की value बढ़ती जाएगी. सिर्फ एक इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडिशनल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही हैं और वो कॉस्ट आर हायर देन द रिटर्न यू आर गेटिंग, तो उस सूरत में फिर ये दिस विल नॉट बी ट्रू. अदरवाइज generally we can say that the sales growth are they have a positive effect on value. Now talking about operating profitability, which measures the profit after profit tax per dollar of sales, always has a positive effect. The higher the better. ठीक, operating profitability, net operating profit after taxes है, so that the higher the value of this operating profitability, the better it is. Now the third thing that we discussed was capital requirement, CR, capital requirement ratio, which measures how much operating capital is needed to generate a dollar of sales. Also has a consistent effect. The lower the capital requirement, the better, since a low capital requirement means that the company can generate new sales with smaller amounts of new capital. ठीक हो गया जी. तो ये भी आपके पास जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि कितना आपको पैसे, कितनी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फॉर जनरेटिंग अ डॉलर ऑफ सेल. तो जितना आपका ये लो होगा, द लोअर द कैपिटल रिक्वायरमेंट द बेटर इट इज. उसकी वजह ये कि लो कैपिटल रिक्वायरमेंट means that the company can generate new sales with smaller amounts of new capital. Or finally, the fourth factor, the weighted average cost of capital, it also has a consistent effect. The lower it is, the higher the firm's value. ठीक हो गया. तो ये चार जो वैल्यू ड्राइवर्स हैं वो किस तरह से आपकी फर्म की वेल्थ को अफेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ दे अफेक्ट योर वैल्यू ऑफ द फर्म. ग्रोथ इज यूजुअली हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन वैल्यू. Operating profitability, the higher it is, the better it is. Capital requirement, the lower it is, the better it is. And the WAC, the lower it is, the higher the firm's value is. Now these operating profitability and this capital requirements are used in calculating expected return on invested capital, which is another important metric in the corporate valuation model. This EROIC, in expected return on invested capital, is defined as the expected net operating profit after taxes for the coming year divided by the amount of operating capital at the beginning of the year. ठीक है, net operating profit
in the coming year, n+1 का मतलब है in the next year divided by capital in the at the beginning of the year, which is the end of the preceding year. ठीक है, सो एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस फॉर द कमिंग ईयर आपने एस्टिमेट किया और उसको अपने कैपिटल जो आपका स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास जो कैपिटल था उससे उसको डिवाइड कर दिया। और दूसरा इसका तरीका ये, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल वैल्यू ड्राइवर्स फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट के जरिए से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, विच मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर करंट ईयर। So this is how we can calculate this expected return on invested capital। ठीक है, इसके लिए ये दो फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। It can be determined using the formula for NOPAT and it can be calculated using operating profitability and and capital requirements। Let's see how we can calculate or how this expected return on invested capital can be used in determining the market value added। Here's an example. A company has capital of $200 million. It has an expected return on invested capital of 9%. Okay, so expected return on capital of 9%, forecasted constant growth of 5%, and a weighted average cost of capital of 10%. What is its value of operation? Part A, the first requirement is we have to find out the value of operations, and part B, what is its intrinsic market value added. So let's try solving this. Now here we are using a different formula for calculating value of operation. So this formula you can also use for calculating the value of operation. Capital plus capital multiplied by expected return on invested capital minus WACC divided by weighted average cost of capital minus G। ठीक है जी, तो अब ये फार्मूला हमने एक नया फार्मूला है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि दिस फार्मूला कैन ऑल द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन कैन बी डिटरमिन यूजिंग दिस फार्मूला एज वेल। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सारी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। कैपिटल इज 2 मिलियन plus capital 2 million multiplied by expected return on invested capital 9% minus WACC is 10% divided by 10% WACC minus 5% growth। Now this 2 million we are putting down here। अब ये जो आगे वाली सारी इक्वेशन थी, this whole thing, when we solve it, it will give us a negative value। Why? Because this is, here you can see 9% minus 10%, तो ये -1 आ जाता है, -1% आ जाएगा ना, तो ये इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू आएगी विच इज -40,000। तो हमारी वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस जो है वो 2 मिलियन माइनस 40,000 इज $160,000। तो दैट वाज द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन। नाउ मार्केट वैल्यू एडेड, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू एडेड। ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई या वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस आ गई 160,000 माइनस कैपिटल। तो कैपिटल हमारा 2 मिलियन है, 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वैल्यू इस वक्त 160,000। इट मींस द मार्केट वैल्यू एडेड इज -40,000। ये भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि हमारी मार्केट वैल्यू एडेड जो है वो नेगेटिव इसलिए कि हमारी वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस जो है वो कैपिटल से कम हो गया। कैपिटल 2 मिलियन इन्वेस्ट किया, लेकिन इस वक्त करंटली जो हमारे वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस आ रहे हैं वो 160,000 आ रहे हैं। दैट इज द रीजन आवर मार्केट वैल्यू एडेड इज कमिंग इन नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कंपनी, जिसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है।
और अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स द फर्म इज परफॉर्मिंग better. Let's see another example in which we are using these value drivers. You are given the following forecasted information for the year 2014. Sales given which is 300 million, operating profitability 6%, capital requirement 43%, growth G is 5%, weighted average cost of capital is 9.8%. If these values remain constant, what is the horizon means what is the terminal horizon value or terminal value, that is the 2014 value of operations. ठीक है, अब इसमें एक नया फॉर्मूला है, इसलिए we'll first see that and then you can use it. ठीक है, ये जो फॉर्मूला इसमें हम यूज करने जा रहे हैं that is this formula के sorry go back, value of operations is equal to capital at year end. Now we are going to multiply with it sales 1 plus G divided by WACC minus G, then we have operating profit minus WACC, then capital requirement divided by 1 plus G. Okay, तो ये this value of operation can be determined using this formula. So here now the capital value for capital was missing. अगर आप क्वेश्चन में वापस चले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया हुआ लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट दी हुई है विच इज़ 43%. तो इसका मतलब ये है कि जी ये 43% जो है वो हमें दिस 43% इज रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्स. तो सेल्स हमारे पास 3 मिलियन की हैं, 3 मिलियन का 43% जो है दैट इज आवर कैपिटल. 3 मिलियन सेल्स यानी ये बता ये रहा है कि 3 मिलियन सेल्स जनरेट करने के लिए हमें 43% कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो सेल्स का 43% जो आपका कैपिटल आ जाएगा. ठीक है, तो वो अब कैपिटल की वैल्यू इस फॉर्मूला में हमने प्लग इन कर दी. कैपिटल इज 129, सेल्स 3 मिलियन है, 300 मिलियन है सॉरी, और 1 प्लस जी 1, ग्रोथ रेट इज 5%, सो 1 प्लस जी इज 1.05, वैक इज 9.8 एंड वैक की वैल्यू भी आप देख लें पीछे दी हुई एट इज 9.8%. तो वो 9.8 मीन्स 0.098 माइनस G is 0.05, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 6%. ये भी आपको OP की वैल्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू जो है प्रॉफिटेबिलिटी 6% गिवन है क्वेश्चन के अंदर, माइनस दिस is the value for WACC, and then we have capital requirement 1 plus G. Now once you solve this whole thing, 129 is here plus this thing. Once we solve this thing we get this 6562 500 and once you solve this part of the equation you get 0.020. Now multiplying these two values we get 130 375,000 plus 129 million of sales. So this gives us the value of operations at 2009 of 259,375,000. ठीक है जी, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला था, बट दिस कैन बी यूज्ड obviously whichever formula is required the formula will be given to you. The derivation of these formulas is not the part that you will be asked for. ठीक है, आपको फार्मूला गिवन होगा, you have to just फिगर आउट कि जी कौन सी वैल्यूज जो हैं वो किस जगह पे आपने इस फार्मूला में लगानी है टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस. सो डिफरेंट फार्मूलाज आर यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, इसमें जो पहली एग्जांपल थी उसके अंदर हमने एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया था. एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टेड कैपिटल के फार्मूले से हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट किए थे, और ये जो दूसरी एग्जांपल हमने ली है इसके अंदर हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट और ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी वाली जो है हमारे पास वैल्यूज थी उनको यूज करके हमने वैल्यू ऑफ ऑपरेशन डिटरमाइन. So here we are going to end our today's lecture.
This part 2 of the lecture covered basically a few examples related to the concept of value of operations and terminal value, and then determining the intrinsic value of a stock, and then we use the wealth drivers of फर्म्स वैल्यू, जिसमें हमने कहा कि जी चार जो हैं वो वेल्थ ड्राइवर्स हैं फॉर अ फर्म वैल्यू, विच इंक्लूड ग्रोथ इन सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो वैल्यू ड्राइवर्स हैं, तो इनको भी यूज़ करके वी कैन ऑल्सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ऑपरेशंस। उसमें हमने एक वेरिएशन देखी कि जी वैल्यू ऑफ ऑपरेशन कैन बी डिटरमिन using the value for expected return on invested capital, और दूसरी हमने इसमें वेरिएशन ये देखी कि value of operations of a firm can be determined using these value drivers, which include operating profitability and capital requirement. So here we are going to end our today's lecture. So part 3 of the lecture will be coming soon, in which we will cover the remaining part or remaining topics of this chapter. So thank you very much, and try practicing these questions yourself, and hopefully the things are going to become easy once you practice these questions. Okay, thank you very much.